यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Good morning. The facilitators means the idioms. Every day, customary, I give you around few idioms to facilitate your intrinsic prowess, speaking power. And I also personally believe that these days you must have been facilitated by these idioms and your speaking prowess must have improved a bit. And that's precisely my idea. Today, I would start with the idiom agreement in principle. Agreement in principle. You must have seen in the cages there are certain point of disagreement. कोई ऐसी झंझट वाली बात है, बहुत सारे मुद्दे उस पर डिस्कशन होते हैं, लेकिन कोई एक कंक्लूसिव टैंजिबल कंक्लूजन पे नहीं आते लोग. लेकिन कहता है कि चलो मिला जुला के एक बात मानते हैं हम लोग, बात की चीज़ बाद में कर लेंगे. मीन्स इन निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट इन विच नॉट ऑल डिटेल्स हैव बीन वर्कड आउट, सारे पहलू पे बात नहीं हुई है, लेकिन एक ब्रॉड मोटा मोटी तौर पे बात हो जाना, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल. It was decided and it was agreed in principle that all Indians shall maintain social distancing. इसके लिए ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had applied curfew or 144 was applied straightway. It was agreement in principle. That was a very emotive appeal from our Prime Minister, that social distancing alone can save us from deadly coronavirus. So, इसको क्या बोलते हैं? Agreement in principle. Our great leader announced and we all agreed upon. That is called agreement in principle. You have to remember agreement in principle. The next is ahead of one's time. Ahead, A-H-E-A-D, ahead of one's time. इससे क्या है? Offering idea not yet in general circulation, highly creative. कभी कभी बात होती है यार, वो बच्चा जो है ना, he is ahead of his time. 9वीं में पढ़ता है लेकिन ग्रेजुएशन का मैथ्स बना लेता है. कभी कभी कोई इंजीनियर्स के बारे में बात होती है, कोई मैथमेटिशियंस के बारे में बात होती है कि ना we should not compare ourselves with him. He is ahead of his time. मतलब बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव, ब्रिलियंट, ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे सिचुएशंस के बारे में बोलते हैं अहेड ऑफ वंस टाइम. दीज फैसिलिटेटर्स आर रियली दैट गिव्स यू वेरी सटल experiences of interchangeably using these idioms to facilitate your speaking power. That helps you to speak better. Next is ahead of the curve. Same curve. Ahead of the curve. Offering ideas not yet in general circulation. Highly creative. Highly creative. By and large, ahead of the time and ahead of the curve are used interchangeably. So you have to remember in this context. मतलब जो बातें लोगों के पास नहीं है, इसके दिमाग में है. टैलेंटेड, हाईली क्रिएटिव,
ahead of time. That is called ahead of the curve, ahead of one's time. The next is ahead of the game. AHEAD. Ahead मतलब आगे. Ahead of the game. Making faster progress than anticipated. Ahead of schedule. अब देखते हो स्कूल में किसी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बोल दिया जाए कि that track and field events has to be demarcated in the field by Wednesday. But some of the teachers are so smart. I'm talking about physical education teachers. It was announced on Monday, and by Monday evening he did everything complete. इसको क्या बोलते हैं? Ahead of the game, making faster progress than anticipated. Ahead of the schedule. Schedule बनी थी कि it would be done by Wednesday, and he did by Monday evening itself. Very fast. Such people are always respected and widely acknowledged. Air rage, AIR, air rage, RAGE. क्या होता है? Angry behavior inside an aeroplane. Do you remember in IC 814 possibly? It was the year 1999. There was Indian Airlines plane which was hijacked from Nepal, and it was taken to Punjab first, then it flew to Pakistan, then it flew to Dubai, and finally to Kandahar. It was taken hostage by terrorists, and they had demanded some ransom. They had demanded exchange of few prisoners in lieu of the life of the passengers. Some of the passengers, while sitting in the plane, they grew restless, and there was air rage. Air rage मतलब वहाँ पे कुथम कुथी लड़ाई होने की बात. इसको क्या बोलते हैं? एंग्री बिहेवियर इनसाइड एन एरोप्लेन. कितना दिन तक बैठा रहेगा? लोग तंग आ गए थे, बैठे बैठे भी लोग उब सा जाता है. तो देयर वाज अ फिस्ट फाइट. Ultimately, those criminals, those terrorists, killed fellow passengers because they were not having weapon, but that was situation of air rage. जो आसमान में एरोप्लेन के अंदर जो कोई एंग्री बिहेवियर जो होती है ना, जो कि लड़ाई में भी कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एयर रेज. एयरी फेरी, एयर से एयरी, AIRY, एंड फेयर से फेरी, FAIRY. Airy fairy, whimsical, nonsensical, impractical. What is whimsical? एक कहता ना, he is a very whimsical character, insane type का, पागल type का, not very balanced. Come on, you are acting whimsical, you are near to stupid, one who behaves like a stupid man. Unstable character, they are called whimsical. 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 Come on, why are you acting like a whimsical character? Totally irrational sort of guy. Stupidity. They are called whimsical. Airy fairy, whimsical, nonsensical, impractical. Nonsensical means there is one word called sense. SENSE. What is sense? Sensible guy. समझदार जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? He is a sensible guy. He is a sensible man. और दूसरा होता है nonsense. Highly impractical, अनर्गल बात करने वाला. देखे होंगे बेवकूफ टाइप का लोग होते हैं वो. इम्प्रैक्टिकल टाइप का, बोलना कुछ, बात बात में बेइज्जत कर देना. दे आर कॉल्ड नॉनसेंसिकल. ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? एरी फेरी. ओह, कम ऑन, अवॉइड सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. ही इज नॉट अ नॉर्मल गाय, ही इज एरी फेरी. सो व्हेन यू यूज these idioms, it will give a very kind of soothing feeling to yourself first. Forget others. And mind you, you should not be very conscious about it. What others will think about it.
others might cast aspersion on me. अरे देखो ये इसको ढंग से नहीं बोलने आता, क्या गलत बोल दिया. यदि आपने गलत बोला तो या तो अच्छा बंदा होगा, सुधार देगा. यदि वो गलत बंदा है तो उसके सामने गलत मारो ना. मारने का मतलब थप्पड़ नहीं मारने का. idioms लगाओ, बोलो. And if somebody is literate and sensible, he might correct you if you are wrong. But in process, you will develop the habit of speaking and uttering these kind of idioms, which will embolden your confidence and bolster your willpower to come up again and again. And that's the only way that you can really pick up very good English, you know. So, we should not be airy and fairy, rather, we should be very serious about our responsibilities. I'm talking when the responsibility comes not only for the country, but at your home also. You have to be a responsible husband, you have to be a responsible son, daughter, mother, you know, because you owe a lot to your, not only to the society, but to your family. You should not be airy and fairy. The idiom is airy fairy. Don't try to be airy fairy. Hawa hawai mat bano. Try to be serious. In that sense it is used. The next is albatross around one's neck. Albatross in one's neck. Albatross is a kind of sea bird. समुद्री पक्षी होता है. कभी आप बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता में देखे होंगे, समुद्र किनारे जाओ तो सफ़ेद रंग का चोंच के पास थोड़ा सा काला और पीला टाइप का होता है. वो मच्छियाँ खाता है. मच्छी मतलब फिश इन द ओशन. आप समझो कि वो गले पड़ जाए. अल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक. किसी का पुराना पाप. देखते हो कभी कभी क्या होता है कि कोई गवर्नर बन गया और अचानक वो किसी ज़माने में मर्डर किया हो, उसकी रिपोर्टिंग आ जाती है पेपर में. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समथिंग फ्रॉम वंस पास्ट दैट एक्ट्स एज ए हिंड्रेंस. गवर्नर की उसकी नॉमिनेशन हो गई थी, अपॉइंटमेंट हो गई थी. somebody files a PIL. How can he become a governor? He has a criminal record. वो बेचारा लास्ट में क्या बोलेगा? There was albatross around my neck. ये तो यार गले की फांस हो गई. So my dear children, I told you albatross is a sea fish, समुद्री पक्षी. इसकी कहावत यह है कि समुद्री पक्षी यदि आपके गले के पीछे फंस जाए, आसपास नाचने लगे, तो हाउ अनकंफर्टेबल यू शुड फील. तो किसी का पुराना पाप या पुराना मिसडीड सामने प्रकट हो जाए और इतनी अच्छी कोई सक्सेस मिल रही थी, कोई अपॉइंटमेंट मिल रही थी, उसके पीछे उसको हाथ धोना पड़ जाए, उसके कारण इस इडियम को क्या बोलते हैं? अल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक. He was almost through to be there at Raj Bhavan as governor of West Bengal, but his criminal record proved to be albatross around his neck. I hope you understood. Albatross, ये बहुत ही famous है. How can I say यार? I did something wrong in my early days, and that proved to be albatross around my neck. You know. Some of the misdeeds of Donald Trump is acting, or maybe that coronavirus incident might prove albatross around his neck when he files nomination for second term as president of mighty America. So that is called albatross around his neck. And this coronavirus incident might prove to be an albatross around his neck in his victory and defeat. You know. The next is alive and kicking. अभी मैंने कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया. बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं ठीक तो हो या कोरोना वायरस खा गया? तो बोलता नहीं यार, हेलो आई एम फाइन, आई एम अलाइव एंड किकिंग. ठीक ठाक है, तुम ठीक हो? ठीक है, बात तुम्हारी हो गई, लगता है तुम भी बची गए हो. सो दैट इज कॉल्ड आई एम अलाइव, आई एम फाइन एंड किकिंग. अलाइव एंड किकिंग इन गुड हेल्थ डिस्पाइट हेल्थ प्रॉब्लम्स. अभी देखो इससे पैंडेमिक, एनी वन कैन बी eaten up by coronavirus.
So somebody calls up some friend. Hello, how are you, my dear? बोलता है I'm fine. यार इट बहुत जस्ट ए कॉल, बहुत दिन से बात नहीं किया था, लेकिन वो पूछना चाह रहा था कि बहुत दिन से बात नहीं हुई है, कहीं कोरोना तो नहीं लग गया उसको। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ समझाने के लिए। इसको क्या बोले? ही इज फाइन एंड किकिंग, alive and kicking, all alive and kicking. My family members are alive and kicking. हाथ गोड़ मार रहा है, हाथ पांव चला रहा है, इसका मतलब जिंदा है। All along, next one is all along. For the entire time something has been happening. All along my life, we have been seeing something or the other. All along our life, something or the other will keep on happening. होता है कि नहीं? कोई ऐसा बंदा है जिसके जीवन में कोई घटना दुर्घटना जिंदगी भर नहीं हुआ हो, छोटी बड़ी अच्छी बुरी हर तरह की घटना अपने जीवन काल में, और ये जिंदगी ये घटना है, घटनाओं से भरा हुआ ये जिंदगी है। दैट इज व्हाई इट इज सेड ऑल अलोंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, so long as you are alive, all along your life, you will find incidents and happenings, good, bad. It said life is not a bed of roses. It is full of trials and tribulations, dangers and difficulties. All along your life, you will keep on finding some of the incident or the other. You will come across lots of difficulties, hardships, sufferings, stumbling blocks, beautiful moments too. All along, जिंदगी भर। All along का क्या मतलब हुआ? For the entire life, entire time. और मान ले लाइफ के बारे में हुई, ठीक है, नहीं तो मे बी फॉर ए मंथ यू आर marooned on the island and somebody asks you, how was your experience on the marooned island? All along I was having tumultuous situation just to keep myself surviving on this marooned island, you know, all along. अगला वर्ड है all and sundry, SUNDRY, all and sundry. इसका मतलब क्या हुआ? Everyone, each one. So my dear, the coronavirus had closed all the offices. On its opening, the president of the company said, all and sundry, we are all fine. Everyone, each one. Has all of them joined here? Reports from the Department of Personnel, those who looks after the personnel department, state manager, he said, all and sundry are present here in whole and hearty condition, sir. All and sundry, everyone, each one, हर कोई ठीक है सर, कोई गायब नहीं हुआ। Nobody succumbed to corona injury, corona pandemic. All bark and no bite. कहता है नहीं, खाली कुत्ता की तरह भौंकेगा, काटेगा नहीं। It is said all bark and no bite, tending to make verbal threats but not to deliver on them. कहते यार पापा जी इसके बाद पे जाइएगा मत, ये केवल भौं भौं करेगा, कुछ करेगा नहीं। ही इज जस्ट लाइक ए बार्किंग डॉग, डोंट गेट स्केयर्ड एट हिम, इट्स ऑल बार्क एंड नो बाइट। ये केवल बकवास करेगा, उसके बाद भौंक भाग के चला जाएगा। डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ हिम। जैसे अभी पाकिस्तान, ये कभी कभी क्या करता है, बार्क तो करता है, कभी कभी बाइट भी कर लेता है थोड़ा सा। दैट इज they involved in the skirmishes at the border, LOC, लेकिन बार बार धमकी जरूर देता है, आइटम बम फोड़ दूंगा, टैक्टिकल बम है, पाव पाव किलो का है, आधा पाव का बम है मेरे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड, कम ऑन, फॉरगेट इट, इट इज ब्लडी ऑल बार्क एंड नो बाइट, ऑल नॉनसेंस दे आर टॉकिंग, empty threats. India has smashed Pakistan as and when they felt like, and they gave a damn care to what their all bark and no bite threats.
of throwing nuclear and tactical nuclear weapons to India. The last one is all bets are off. कभी कभी देखिए all bets are off, इसका मीनिंग क्या हुआ? What seemed certain is now unclear. कभी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होते रहता था 80s 90s में. They always dominated because they had a very good bowling attack and we had good batting attack. But sometimes Indian batting attack collapsed. As a result, Pakistan has got the chance. No, Pakistanis are going to win now. लेकिन लास्ट में क्या हुआ? 3 wickets remaining, 2 runs and 20 balls. उनके सारे होप खत्म हो गए. क्या बोलते हैं? All bets are off. पहले क्या था? All seemed certain. उनको लग रहा था कि जीत जाएंगे. जब एक विकेट के ऊपर एक विकेट गिर रही थी, ultimately it stopped at 7 wicket. 20 balls remaining, 3 runs to score to get a victory. तब पाकिस्तानी क्या बोलता है? All bets are off. अब तो खत्म हो गया यार, सारी उम्मीद खत्म हो गई. इसको बोलते हैं all bets are off. Now India is going to win. So my dear children, idioms, these idioms are nothing less than a great facilitator. If you remember, if you memorize by your heart, this shall help you and shall enable you to speak better and very flawless English. Try to memorize these facilitators. That shall help you immensely. Thank you very much. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय